Hello everyone, welcome to the SAM, that is Study Art, Motivation and Education, and in this video we are going to cover up the last video of major connectors, mandibular major connectors, that is swing lock labial bar. It was proposed by J.J. Simon in 1963 and it is nothing but a combination of lingual bar and a labial bar. Okay, so labial bar does not require bulk of a conventional labial bar फॉर रिजिडिटी. ओके, देन स्विंग लॉक के दो पार्ट होते हैं, एक लॉकिंग मैकेनिज्म होता है एंड हिंज होता है. हिंज एक साइड पे होता है, दूसरा लॉकिंग मैकेनिज्म होता है. ठीक है, इंडिकेशंस हम तभी देंगे, इसमें ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है. ठीक है, बस इतना ही याद रखना है कि क्या होता है एंड क्यों यूज़ करते हैं. तो क्यों यूज़ करते हैं उसमें इंडिकेशंस आ जाएंगे. लेबियल प्रोक्लाइन एंटीरियर अबटमेंट है तो अनफेवरेबल पाथ ऑफ इंसर्शन है, मिसिंग की अबटमेंट प्लस पेरियोडोंटली कॉम्प्रोमाइज टीथ है दैट रिक्वायर स्प्लिंटिंग, तभी हम स्विंग लॉक लेबियल बार को यूज़ करेंगे. ओके, बहुत छोटा सा वीडियो है ये. ओके, एंड या दिस इज़ ऑल अबाउट द स्विंग लॉक लेबियल बार. इतना ही आपको जानने की ज़रूरत है. एंड ऑल्सो आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट 1-on-1 classes. Please let me know in a comment section that if you guys want that or not, so that I can release the forms. Okay, and we can work on it and I can take your 1-on-1 classes and the details will be given to you, to those who register, and I will mail all the details. Okay, so this is all about it. Next we are going to start the minor connectors. Thank you so much for watching and don't forget to subscribe the channel, and I hope this video helps you in your academics.